friends, welcome to English Minds, where every word unlocks wisdom. Literary terms aren't just tools, they are keys to imagination, expression, and understanding. Let's not just learn literature, let's live it, share it, and spread it. English Minds Literature, Har Ghar. Today, part 6. Let's begin without delay. Who were the Lollards? Lollards, they are followers of John Wycliffe. In the 14th and 15th century. Option A is correct answer. A religious group in the 14th 15th centuries following जॉन वेक्लिफ. लोलर्ड्स एक धार्मिक सुधारवादी समूह था जो 14वीं सदी के जॉन वेक्लिफ के विचारों को मानते थे. वेक्लिफ ने चर्च की धारणाओं और संपत्ति के विरुद्ध आवाज उठाई. दे एम्फसाइज्ड द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल ऑन द चर्च. वेक्लिफ इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन. मॉर्निंग स्टार of the Reformation. Lollards wanted to Bible in vernacular, means लोक भाषा में Bible, a move towards the Protestantism. Next. The term malapropism is derived from which character? Option A, Mrs. Malaprop from Sheridan's The Rivals, known for misusing words. Option A. The ridicule misuse of a word term derived from Mrs. Malaprop in Sheridan's The Rivals. She was always misapplying word. Example, the very. Pineapple. Of politeness. मेलाप्रोप शब्द का नाम शेरिडान के नाटक द राइवल्स के एक हास्यप्रद पात्र मिसेस मेलाप्रोप से लिया गया है. शी ऑफन यूज्ड लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इनकरेक्टली which created comic effects, saying illiterate him from your memory instead of obliterate. Next. What does malapropism means? The ridiculous misuse of a word, often humorously similar in sound to the correct word. Malapropism एक भाषिक गलती होती है जिसमें कोई शब्द अपने सही उच्चारण से मिलता जुलता लेकिन गलत अर्थ वाला शब्द बोल दिया जाता है, जिससे हास्य पैदा हो जाता है, मीन्स जैसे हास्य माहौल क्रिएट होता है. ही इज द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस इंस्टीड ऑफ पिनैकल ऑफ पोलाइटनेस. मीन्स पिनैकल, पाइनएप्पल इंस्टीड ऑफ पिनैकल. इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल आयरनी और लिंग्विस्टिक ह्यूमर. नेक्स्ट. द कॉमेडी ऑफ मैनर्स typically arises in which kind of society? Option B, a highly developed lizard upper class society that values politeness and social etiquette. Etiquette में स्पेल में पूछा जा सकता है ETIQUETTE. Comedy of manners, a form of which laughter is provoked by exaggeration of fashionable behavior
absurdities in fashion itself, or departure from what is considered to be civilized normality of behavior. Thus, a comedy of manner can only arise in a highly developed society in which there is a lizard class which not only has standards of politeness and good sense in human relationships but tends to give such standard first importance in in human relationship but tends to give such standard first importance in social life. The comedy of humorous by Ben Jonson and his younger contemporaries dealt with fundamental human appetites and was therefore concerned with much more than what was regarded as civilized behavior by fashionable society. The comedies of Molière were the first true example of the comedy of manners. The humor of Ethers, Vicerly, and Vanbrugh often depended more on coarseness than on wit. On the other hand, English prose had a new fluency without losing all the rich substance of the days of Johnson, and the work of Congreve shows incisive dialogue with sometimes even poetic force. कॉमेडी ऑफ मैनर्स उन समाजों से उत्पन्न होती है जहां शिष्टाचार, सामाजिक दिखावा और अमीर वर्ग की चालाकियां प्रमुख होती है. द जानर सैटिराइज्ड द मैनर, affections and hypocrisy of the elite like William Congreve, The Way of the World, Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. Next. The earliest example of comedy of manners is found in the works of option D, Restoration comedies. कॉमेडी ऑफ मैनर्स का आरंभ रेस्टोरेशन पीरियड 1660 ऑनवर्ड्स में हुआ जब चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में रंगमंच पुनः जीवित हुआ. राइटर्स लाइक विलियम वाइसरली, द कंट्री वाइफ नॉट लाइफ, एंड विलियम कंग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड pioneered this style. Witty dialogue, sexual intrigue, satirical tone. Molière, France, and Ben Jonson were England influenced this genre, but it matured during the English Restoration. Next. What is the key features of the comedies by Ethers, Vicerly, and Vanbrugh? Option B, coarseness combined with wit. ये तीनों लेखक रेस्टोरेशन कॉमेडी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं. उनकी रचनाओं में विलासिता, सेक्सुअल इन्यूंडो एंड सामाजिक व्यंग और तीव्र बुद्धि का मेल होता है. Their comedies reflect urban sophistication, immorality of the elite, and linguistic wit. Vicerly, The Country Wife. Next. Congreve, The Way of the World is an example of option B, comedy of manners with sharp dialogue and sometimes poetic flair. विलियम कंग्रीव की यह रचना रेस्टोरेशन पीरियड के अंतिम और सबसे रिफाइंड कॉमेडी मानी जाती है. इसमें सामाजिक चतुरता और नैतिक छल प्रपंच की सुंदर व्याख्या है. यूज ऑफ कपलेट, आयरनिक टोन, लेडी विटी वर्सेस रैक हीरो ट्रोप. कैरेक्टर MIRA मिरेबल. and Millamant.
Next, what is mask? A type of dramatic entertainment performed at court featuring songs, dance, and elaborate costumes. Option A is correct answer. A mask sought a dramatic entertainment in which originally the performance wore mask of peculiar form, suggestive of the allegorical characters assumed. The performance were usually the courtiers. It flourished mainly in England during the career of Ben Jonson. The real charm of these masks lay in songs, dances, and elaborate customs. The dancers were known as maskers. Ben Jonson has written some of the most popular masks. Example: the Mask of Him, Mask of Queens, etc. मास्क एक कोर्टली एंटरटेनमेंट होता था जो ट्यूडर और स्टुअर्ट काल में प्रचलित था. इसमें नृत्य, गीत, संवाद, वेशभूषा और दृश्य प्रभाव होते थे. इट वॉज ऑफन परफॉर्म्ड बिफोर द मोनार्की एंड कन्वेड माइथोलॉजिकल और एलिगोरिकल themes. And dominant writers Ben Jonson, Inigo Jones, state designer. Next, which of the following are famous masks written by Ben Jonson? Option A, the Mask of Queens and the Mask of Hymns. Ben Jonson was the chief literary figure of mask in England. He collaborated with Inigo Jones for design and architecture. The Mask of Queen in 1906. No. The Mask of Queen is 1609. एकदम opposite. And Socrated 12 queens as symbol of virtues. The Mask of Him focused on marriage and harmony. Jonson mask combined classical symbolism with elaborate stagecraft. Next, who were usually the performers in mask? A mask. Courtiers and nobles. मास्क को आमतौर पर राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था जिसमें राजा, रानी और उच्च वर्ग के दरबारी भाग लेते थे. दे वर नॉट प्रोफेशनल actors but nobility, adding prestige and exclusivity to the performance. Queen Anne and her ladies often participated in the mask. What does melodrama refers to? Melodrama, originally a play with music, now a play of sensational and improbable characters. Option A, a play with sensational and improbable characters, originally accompanied by music. मेलोड्रामा एक ऐसा नाटकीय रूप है जिसमें भावनात्मक अतिशयोक्ति मीन्स एग्जैजरेटेड इमोशंस, नैतिक संघर्ष और अच्छे बुरे पात्रों का स्पष्ट भेद होता है. ओरिजिनली दीज प्लेज वर accompanied by music, melos and intensify emotions. एग्जाम्पल 19th सेंचुरी के विक्टोरियन थिएटर में लोकप्रिय था. फिल्म्स और एंड सोप ओपेराज often use melodramatic tropes. Who first used in term metaphysical poets? Option C, Samuel Johnson. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पहली बार मेटाफिजिकल पोएट्स शब्द का प्रयोग 18th सेंचुरी में किया जब उन्होंने जॉन डन और उनके अनुयायियों की शैली का वर्णन किया. ही क्रिटिसाइज्ड देम for being too intellectual and far-fetched in imagery. Johnson's intention negative, but modern critics admire their ingenuity. The most heterogeneous ideas are used
by violence together. Metaphysical poet term applied to a group of 17th century English poets Donne, Herbert, Cressa, Cowley, Henry Vaughan. First used by Dryden, but later on applied by Dr. Samuel Johnson in his Lives of the Poets because they drew their conceits from races of learning not very much frequented by common readers of poetry. Next, what is the main feature of metaphysical poetry? Option A, intellectual wit, unusual conceit and philosophical terms. Themes. मेटाफिजिकल पोइट्री का मुख्य गुण अनयूजुअल कंसीट मीन्स extended metaphors, philosophical and religious speculation, intellectual over emotion, paradox and irony, done comparison of lovers to a compass in a valediction forbidding morning. Which of the following poets are examples of metaphysical poem? John Donne, Richard Cressa and Andrew Marvell. मेटाफिजिकल पोइट्स वो कवि थे जिन्होंने 17वीं सदी में लिखते हुए इंटेलेक्ट आयरनी एंड कॉम्प्लेक्स इमेजरी का प्रयोग किया. जॉन डन, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. एंड्रू मॉर्वेल blends metaphysics with politics to hitch coy mistress and and Richard Cressa religious metaphysical themes. Next, which of the following is not typical of metaphysical poetry? Focus on emotional simplicity. मेटाफिजिकल पोइट्री में इमोशनल सिंप्लिसिटी नहीं होती, बल्कि इसमें होता है इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी एंड ड्रामेटिक ओपनिंग, एब्रप्ट बिगनिंग, एक्सटेंडेड मेटाफर एंड पैराडॉक्सिस. इमोशनल सिंप्लिसिटी जैसे गुण रोमांटिक पोइट्री एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ में मिलते हैं. नेक्स्ट, Methodism as a religious movement was founded by option A, John Wesley. जॉन वेस्ले ने 18th सेंचुरी में मेथोडिज्म की स्थापना की. यह एक प्रोटेस्टेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसमें व्यक्तिगत विश्वास, नैतिक जीवन और गरीबों की सेवा पर बल दिया गया. It emphasized personal salvation, emotional teaching, and methodical Bible study. Methodism, a religious movement founded by John Wesley. The name was at first applied to himself and his associates when he was a student at Oxford in 1729, referring to the strict rules that they made for themselves in order to follow a religious life. From 1739, the movement spread rapidly among the poor all over England, and it became particularly strong in the industrial towns. When Methodism was divided into local societies, preaching houses, and circuits, survived by lay preachers, organized centrally by an annual conferences, and directed by John Wesley. Next, the term Methodism originally referred to option A, strict rules and disciplined religious life followed by John Wesley and his associated at Oxford.
मेथडिज्म शब्द की उत्पत्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप में हुई जिसे होली क्लब कहा जाता था। होली क्लब। ये लोग प्रार्थना, उपवास और बाइबल अध्ययन के नियमबद्ध तरीके अपनाते थे। जॉन वेस्ली एंड चार्ल्स वेस्ली इनके प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट, Methodism spread rapidly among which social group in England? Option B, the poor and working classes, especially in industrial towns. मेथडिज्म में सबसे अधिक औद्योगिक नगरों में काम करने वाले गरीब और श्रमिक वर्ग को प्रभावित किया, क्योंकि यह उनके दुख, दर्द और आध्यात्मिक जरूरतों को संबोधित करता था। इट प्रोवाइडेड मोरल डिसिप्लिन, कम्युनिटी सपोर्ट एंड स्पिरिचुअल होप ड्यूरिंग हार्श इंडस्ट्रियल लाइफ। नेक्स्ट, द मिडिल इंग्लिश period in English literature is roughly dated between option B 1350 to 1500. मिडिल इंग्लिश पीरियड की प्रमुख विशेषता थी चॉसर्स राइटिंग द कैंटरबरी टेल्स एंड ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश में चेंजेस, सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश भाषा में फ्रेंच और लैटिन दोनों का शब्दों का समावेश हुआ। नेक्स्ट, which major political and social events marked by Middle English period? Option A, the Black Death, Peasant Revolt, rise of the Lollards. The period of English literature between the replacement of French and Middle English as the language of court and the early appearance of definitely modern English writings, roughly between 1350 to 1500, the age of Chaucer 1340 to 1400 was marked by political and religious unrest. The Black Death 1348 to 1350, the Peasant Revolt 1381, and the rise of the Lollards. The great cycle of misery plays flourished toward the end of the period. The morality came into existence, and the last year of the 15th century saw the arrival of the interlude. In prose, it was a period of Wycliffe sermons and his translation of the Bible. In medieval travels of prose, romance, and melodies de Le Morte d'Arthur, romances, both prose and mythical, continued to be popular, with Sir Gawain and the Green Knight, and the finest example, the period between 1352 and 1400, was a rich poetic age. It saw a first major English poet, Chaucer, as well as such poetry as the Paul, the Vision of Piers the Plowman, and Gower's Confessio Amantis. The 15th century was a weak poetic age. Poetry consisted chiefly of Chaucerian imitations, and only Helvok, Skelton, and James I of Scotland gave it any distinction. The Black Death 1348 to 1500, 1350, not 1500, and the Peasant Revolts 1381, and लॉलार्ड मूवमेंट जॉन वेक्लिफ द्वारा चर्चित प्रेरित, जो चर्च की आलोचना करता था और बाइबल को आम जनता की भाषा में लाने की वकालत करता था। दिस इवेंट डीपली इन्फ्लुएंस्ड द थीम्स ऑफ लिटरेचर, जस्टिस, मोरालिटी एंड सोशल रिफॉर्म। Geoffrey Chaucer, a major poet of the Middle English period, is best known for option A,
द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स, जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है द कैंटरबरी टेल्स, एक फ्रेम नैरेटिव जिसमें विभिन्न यात्रियों की कहानियाँ टेल्स शामिल हैं। मिडिल इंग्लिश एंड रियलिज्म, सटायर एंड ह्यूमर। रियलिज्म, सटायर एंड ह्यूमर। Night, Wife of Bath, Miller, etc. Next, the 15th century was a weak poetic age. Its poetry consisted chiefly of Chaucerian imitations, and only Skelton and James I of Scotland gave it any distinction. Next, the 15th century in English poetry is generally considered a weak poetic age dominated by Chaucerian imitations. 15वीं सदी को द बैरन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इस युग के अधिकांश कवि चौसर की शैली की नकल करते थे, लेकिन उस स्तर की मौलिकता नहीं ला सके। एंड मेजर इमिटेटर्स थॉमस जॉन लिडगेट। लिटरेरी इनोवेशन कम था, शैली और भाषा में रिपीटेटिव दोहराव देखने को मिलता था। नेक्स्ट, मिरेकल प्लेस इज द medieval period primarily depicted. Option B, religious drama based on lives of saints and biblical stories. मिरेकल प्लेस मध्यकालीन धार्मिक नाटक थे जो संतों के जीवन, ईसा मसीह के चमत्कारों और बाइबल की कहानियों पर बेस्ड होते थे। ये नाटक चर्च के आदेश से अक्सर ग्रामीण मेलों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रस्तुत किए जाते थे। Misery plays Bible stories, morality plays abstract virtues and vices. Miracle plays are medieval religious drama. Subjects are represented from the lives of the saints. It was very popular in the Middle Ages. Next, the modernist period in English literature is generally considered to begin around option B, the First World War, 1914. मॉडर्निज्म के शुरुआत ऑफ एन वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 के आसपास मानी जाती है, जब राइटर्स ने अपनी पुरानी परंपराओं का विरोध और नवाचार एक्सपेरिमेंटेशन को अपनाया। एंड prominent features fragmentation, stream of consciousness, alienation, symbolism, and major writers Eliot, James Joyce, Virginia Woolf. Modernist period in English literature. The modernist period in England may be considered to begin with the First World War in 1914, to be marked by the flowering of talent and experiment that came during the boom of the 20s and fell away during the economic depression in 30s. The years of Second World War made England a fortress, and it was followed by a period of uncertainty, a sadly diminished age. In the early years of the modernist period, the novelists of the Edwardian age continued as major figure, with Galsworthy, Wells, Bennett, Foster, and Conrad dominating the scene. A new fiction centered in the experimental of the inner self was coming into being in the works of such writers as Dorothy Richardson and Virginia Woolf. It reached its peak in the publication in 1922 of James Joyce, Ulysses.
The theatre saw the social plays of Galsworthy, the play of ideas of Shaw, and the comedy of manners of Maugham, all well established in the Edwardian age. Perhaps the greatest change in literature, however, came in poetry and criticism. In 1914, Bridge was poet laureate. He was succeeded in 1930 by John Mansfield, who died in 1967. Wilfred Owen was a powerful poetic voice, but his career ended with an untimely death in the First World War. In the work of Yeats and Eliot and W. H. Auden, Edith Stilwell, and G. M. Hopkins, a new poetry empathetically emerged. Next, this novel published in 1922 is often considered a peak of modernist experimental fiction. Option B. जेम्स जॉयस यूलिसिस. जेम्स जॉयस का यूलिसिस 1922 एक लैंडमार्क मॉडर्निस्ट नॉवेल है जिसे उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन और होमरिक पैरेलल्स के लिए जाना जाता है. इट फॉलोज वन डे जून 16, 1904 the life of Leopold Bloom in Dublin. It considered one of the most challenging and celebrated novels in world literature. Next, the early years of the modernist period continued to feature novelists from the Edwardian age, such as Option A. Galsworthy, Wells, Bennett, Foster and Conrad. एडवर्डियन नॉवेलिस्ट में मॉडर्निस्ट थीम्स की नींव रखी थी, जैसे सोशल क्रिटिसिज्म, रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ. जॉन गल्सवर्दी इज द फॉरसाइट सागा, H.G. Wells, science fiction and social satire, The Time Machine, Arnold Bennett, The Old Wives' Tale, E.M. Foster, A Passage to India, जोसेफ कॉनराड, हार्ट ऑफ डार्कनेस. ये सभी राइटर्स ट्रांजिशन ब्रिज हैं विक्टोरियन रियलिज्म से मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंटेशन की ओर. नेक्स्ट, द न्यू फिक्शन ऑफ द मॉडर्निस्ट पीरियड फोकस्ड ऑन आंसर ए, experimental exploration of the inner self and consciousness. मॉडर्निस्ट फिक्शन ने फॉर्म और कंटेंट दोनों में एक्सपेरिमेंटेशन किया. फोकस रहा इनर साइकी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन पर. फॉर एग्जाम्पल, टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, and key concern identity, subjectivity and disillusionment. Next, the Edwardian age in English theatre was notable. Option A, social plays and by Galsworthy, plays of ideas by Shaw and comedy of manners by Maugham. एडवर्डियन थिएटर के कंटेंट अधिक सोशली कॉन्शियस हुआ एंड जॉन गल्सवर्दी स्ट्राइव, जस्टिस, लीगल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, रेशनैलिटी, क्लास एंड फेमिनिज्म. एंड डब्ल्यू सोमरसेट मॉन्ग, witty comedies, wit, manners and hypocrisy critique. इस युग में प्रॉब्लम प्लेज और प्लेज ऑफ आइडियाज, ये एज प्रॉब्लम प्लेज और प्लेज ऑफ आइडियाज के लिए फेमस है. नेक्स्ट, हु वाज द पोएट लॉरिएट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914? Option C, Robert Bridges.
Robert Bruce served as a poet laureate 1913 to 1930. Though not a modernist, he supported experimental poets like G.M. Hopkins, whose work he helped publish posthumously. His own poetry was classical. His own poetry was classical in form, less innovative than modernist. John Mansfield became poet laureate in 1930. Next, Wilfred Owen is the best remembered as option B, a powerful poetic voice who died young in the First World War. विल्फ्रेड ओवन की कविता वर्ल्ड वार फर्स्ट के हॉरर्स और सोल्जर्स एगोनी को डिपिक्ट करती है. डल्स ए डिकोरम इस्ट और एंथम फॉर डूम्ड यूथ उनकी कविताएं हैं. ही डाइड इन 1918, जस्ट अ वीक बिफोर द आर्मिस्टाइस. ही इज क्लासिफाइड as a war poet, deeply anti-war, compassionate, honest. Next. Morality plays are characterized by a type of medieval drama. Morality plays are sermons and in disguise. Their main theme is the struggle between the forces and good and evil. The characters are abstract, allegorical, or symbolical, bearing the names of or virtues and vice they represent. The best example of morality play, The Castle of the Perseverance and Everyman. So, option B is correct answer. Sermon is disguised with allegorical characters representing virtue and vice. Morality plays नैतिकता आधारित नाटक मिडिवल यूरोप से के ऐसे रिलीजियस नाटक थे जो एलिगोरिकल प्रतीकात्मक कैरेक्टर्स का प्रयोग करते थे, जैसे वर्चू, वॉइस एंड गुड डीड्स, नॉलेज एंड मेन एम मॉरल इंस्ट्रक्शन देना. डायरेक्टिक टोन सिखाने वाली शैली होती. एंड एवरी मैन, यह प्ले स्पिरिचुअल स्ट्रगल और मानव आत्मा के सेल्वेशन पर केंद्रित है. नेक्स्ट, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्लेज इज ऑप्शन ए, एवरी मैन is the most famous morality play. In the play Everyman, a representation of mankind is visited by death and must give an account of his life. Only good deeds goes with him to grave, symbolizing Christian doctrine. ये प्ले दिखाता है कि मृत्यु के समय केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं. नेक्स्ट, misery play in medieval drama generally deals with a type of medieval religious drama dealing with biblical stories. In recent years, the term has sometimes been used for play dealing with crime and detections. Misery play एक मिरेकल प्लेस ड्रामाटाइज्ड बिब्लिकल इवेंट्स, क्रिएशन, फॉल ऑफ मैन, नो आर्क, crucifixion, and performed during festival, mostly by guilds in towns, and purpose teach the Bible to illiterate public. यह नाटक धार्मिक शिक्षा के माध्यम थे, जैसे एक चलती फिरती बाइबल. So, option B is correct answer, biblical stories and religious themes. Mysticism in literature refers to
What is mysticism? Teaching and belief that knowledge of God and of real truth may be obtained through meditation or spiritual insight independently of the mankind and the sense. It also means a theory postulating the possibility of direct and intuitive acquisition of infallible knowledge or power. So, option A is correct answer. Direct knowledge of God or truth through spiritual insight, independent or reason or sense. Mysticism साहित्य में वह प्रवृत्ति है जिसमें डिवाइन ट्रुथ या स्पिरिचुअल रियलिटी को इनर एक्सपीरियंस या आत्मज्ञान के माध्यम से जाना जाता है बिना तर्क या इंद्रियों के। विलियम ब्लेक, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, कबीर, मीरा बाई एंड सेंट्रल आइडियाज गॉड इन विद इन यू, आत्मा के माध्यम से ईश्वर का अनुभव, आत्मा में ही परमात्मा का वास। नेक्स्ट, a myth is best defined as a story passed down that explains early beliefs and natural phenomena like seasons. Option B is correct answer. मिथ एक पारंपरिक कथा होती है जो कल्चरल बिलीफ्स, रिचुअल और नेचुरल फिनोमिना जैसे ऋतुओं का बदलना, दुनिया का सृजन, मृत्यु का कारण को एक्सप्लेन करती है। ग्रीक मिथ्स, डिमेटर एंड प्रिस्फोन explains winter and summers. Indian myths, samudra manthan, myth, cultural and symbolic truth अक्सर सुपरनैचुरल बीइंग्स में शामिल होते हैं। Myth, story handed down from older times containing the early beliefs of race, especially explanation of natural events such as the seasons. Neoclassicism in English literature aimed to revive. Option B is correct answer. Classical qualities of balance, proportion and restraint. Attempt to revive in literature the classical qualities of balance, proportion and restraint applied generally to the English writers of Augustan age, Dryden, Pope, Addison, etc. न्यू क्लासिसिज्म नव क्लासिकी एक लिटरेरी मूवमेंट था जो ग्रीक रोमन क्लासिकल आइडियल्स को पुनर्जीवित करने का पर केंद्रित था। ऑर्डर, डिकोरम, रीजन, बैलेंस, क्लैरिटी, opposed to emotionalism and imagination of romanticism. Famous period 1660 to 1785. Dryden to Johnson to Samuel Johnson. यह मोमेंट शास्त्रीय अनुशासन और सौंदर्य बोध की वापसी थी। नेक्स्ट, which authors are considered key figures in the neoclassical age? Dryden, Pope, Addison. Option A is correct answer. John Dryden, father of English criticism, Heroic Couplet. Alexander Pope, The Rape of Locke, Essay on Criticism. Joseph Addison, The Spectator Essays, Promoting Rationalism. यह लेखक शुद्धता, तर्कशीलता और भाषा की सुस्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। A neologism refers to an old word no longer in use, a type of poetic meter and a dramatic form. Option B is correct answer. A new word or expression or an old word with a new meaning.
Neologism, new word or expression or sometimes or an old word in a new significance. न्यूलॉजिज्म, नव शब्द, एक ऐसा नया शब्द होता है जिसे हाल ही में गढ़ा गया हो या पुराने शब्द को नए अर्थ में प्रयोग किया गया हो, जैसे गूगल एज अ वर्ब, सेल्फी, ब्लॉग, अनफ्रेंड. टी.एस. एलियट एंड शेक्सपियर बोथ क्वाइंड मेनी न्यूलॉजिज्म. ये शब्द लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल हैं. The poetry of Edwardian age saw the emergence of poets like W.H. Auden, Edith Sitwell, and G.M. Hopkins. The Edwardian age 1901 to 10 saw transition poetry a bridge between Victorian and modernist moderns. G.M. Hopkins, through earlier published posthumously influenced Edwardians, and Auden and Sitwell experimented with modern forms, social concerns. यह काल अभिव्यक्ति में नवीनता और शैलीगत प्रयोग का समय था. And today's last question. The primary theme of misery plays is secular love stories, political satire, social realism. Option B is correct answer. Biblical narratives and religious teachings. Misery plays were medieval religious dramas that dramatized creation, fall, crucifixion, and resurrection, etc., performed during religious festival by craft guilds, the York cycle and the Wakefield cycle. इन नाटकों में अशिक्षित जनसमूह को धार्मिक शिक्षा देने का कार्य किया गया था. एंड दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स. Don't forget to press the bell icon for all latest updates. If you found this video helpful, and this video is obviously helpful for you, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon to never miss an update. See you in the next video. Thank you. Until then, stay inspired, stay curious, keep exploring, keep learning.